फॉर्मेट, है ना. जेसन इज द स्टैंडर्ड, है ना. आप जब एपीआई बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा पोस्टमैन है ना, इफ ओपन द पोस्टमैन, तो यहाँ पर आप देखो कि डेटा विच यू आर गेटिंग फ्रॉम एपीआई इज इन जेसन फॉर्मेट, और जो डेटा आप पोस्ट करोगे दैट विल बी आल्सो इन जेसन फॉर्मेट. तो बेसिकली यही आपका एपीआई होता है. द लैंग्वेज बोलते हैं ना, द लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, द स्टैंडर्ड इन विच द डेटा इज एक्सचेंज इज अ जेसन. तो जेसन इज द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट. पता है सबको, जावास्क्रिप्ट अगर पता है तो वो होगा. तो ये नोड जेएस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है. नोड जेएस अगर इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल करो, एंड दिस इज द कोड. ठीक है. एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करो. एक्सप्रेस इज यूज्ड, इज वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क टू बिल्ड द रेस्ट एपीआई. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. ये देखो कितना बड़ा कोड है. इट्स हार्डली, ये तो आई कैन रिमूव दिस थिंग आल्सो, है ना, जस्ट फॉर टाइम बेइंग. ठीक है. जस्ट सपोज आई रिमूव दिस, यू कैन सी हार्डली कितना लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज सफिशिएंट टू मेक अ बैक एंड एपीआई. कुछ भी नहीं है, बैक एंड एपीआई आपका बन गया, रेडी है. ठीक है. आपने इंस्टॉल किया पैकेज डॉट जेसन में जाओ तो वहां पर ऑलरेडी एक्सप्रेस जेस इंस्टॉल्ड है. नहीं, एक्सप्रेस नाम का नोड पैकेज से आपका इंस्टॉल्ड हो गया. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट, अभी देखो मैं दिखाता हूँ. मैं आई विल रन स्टार्ट डिबगिंग रिक्वायर डॉट डेटा. तो व्हाट इज दिस डॉट डेटा? तो मैंने क्या काम किया, आई क्रिएटेड वन मोर जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें आई हैव अ इनिशियल डेटा, बिकॉज आई आज के लेक्चर के लिए आई डिडंट वांटेड टू यूज database because I want to first understand what is the meaning of REST APIs. तो या तो इसमें देखो क्या है, दिस इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट. वेयर डेटा एरे है, एरे में एक ऑब्जेक्ट है, आईडी 1 है. ठीक है. राहुल है, देन आईडी 2, कुछ और नाम है, कंट्री, एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये जो सिंटैक्स है ये ES5 है. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ES5. ठीक है. प्लेन जावास्क्रिप्ट. हाउ डू यू एक्सपोर्ट? तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट इक्वल टू डेटा, मतलब मैं क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपोर्टिंग दिस डेटा. तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट इक्वल टू डेटा. तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा. सो वंस आई इम्पोर्ट, देखो अभी मैंने इसे इम्पोर्ट किया, यू कैन सी डेटा इज व्हाट, सेम ऑब्जेक्ट. देखो ना, वही एरे है, एरे में ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी वहां था वो वेरिएबल ये यहाँ पर आ गया, इम्पोर्ट कर लिया. ठीक है. देन एक्सप्रेस लाइब्रेरी इज, आई एम ट्राइंग टू import the express library. ठीक है. and then from this I am trying to create one REST API. REST API is the name, है ना, but actually this is the object, correct. this is we calling this function express.js, और हम मुझे मिल रहा है एक REST API. and then using this object I am trying to create one dot get. so dot get is already defined, है ना, ये already defined है. जैसे आप टाइप करोगे, suppose I type, है ना, REST API dot, I can see you get option get आया आपको, you get put operator, है ना, you get post operator, you get delete operator. so ये सब if you study ना, there are different end points. एक get होता है, post में पता होगा, even postman, one is get, one is post, one is put, patch, delete, है ना. all this is possible using this. अभी मैं यहाँ पर if I type patch, तो patch भी आ रहा है, बट इसमें अभी नहीं जाएगा what are this operation in the web APIs. बट सिंपल पता है, get से क्या होता है, we get the data. पोस्ट से क्या होता है, पोस्ट डेटा, है ना, सबको पता है पोस्ट डेटा. ठीक है. अभी पोस्ट बाद में आते हैं. यहाँ पर क्या डिफाइंड है, गेट, दिस इज द URL स्लैश यूजर्स. ठीक है. और ये फंक्शन इसमें क्या है, दिस इज द फंक्शन कॉल बैक, दिस इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन से डेटा दे रहा है. सो जो भी डेटा रहेगा वो एज इट इज रिटर्न कर देगा. तो देखो अभी यहाँ पर आया, एंड इट इज क्रिएटिंग द रेस्ट एपीआई एट लाइन नंबर 3000. तो it is running, this is running, है ना. now if I go to port number 3000 लिखा है. ठीक है. so if I go here, you can see I already have given the part localhost 3000 slash users. देखो यहाँ है ना, slash users. okay. so where is that, yeah, sorry, postman हाँ. so in the postman, ठीक है, if I do a get, है ना, send,
So it will return me JSON format, है ना, देखो यहाँ JSON में आ गया. Can you see this thing, JSON format? And you can copy this thing, Control A, Control C. You can go in the browser, यहाँ टाइप करो JSON formatter. ये अच्छा वेबसाइट है JSON formatter, है ना, just paste it here. If you really want to check the object structure, तो साफ से दिखेगा ना, what is the structure? This is the array. Array भी है और JavaScript object, one object, ID1. I have one more object, ID2. See, ID2, and then we have country field, we have address. Address के अंदर address is again a object, house, street. तो ये कौन सा फॉर्मेट है, JSON, है ना. बट JSON and JavaScript is not different, it's the same. But JSON में everything is in double quotes, that's it. Okay, ठीक है. If I open the file, यहाँ पर अगर डेटा में जाओगे, ID was not in double quotes, correct? देखो यहाँ पर the ID property is not in double quotes. Name property, country property, address property, any property is not in double quotes. But if you see the response here, everything is in the double quotes. So that is the only difference between a JavaScript object and a JSON. In JSON, everything is in the form of double quotes. And ultimately, JSON is a notation. It's ultimately a kind of a, what I can say, string only. It's stored in the form of string only. सर ये डबल कोट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब फिर मतलब बस डिफरेंशिएट करने के लिए है या फिर कुछ उसका मतलब भी है? हाँ, नहीं, बस इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया है, स्टैंडर्ड. तो जेसन इज लाइक अ स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड बनाया है, तो उसमें अभी बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन व्हाई दे डिड दिस. ठीक है, बट डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम रीजन, है ना, कि व्हाट वाज द नीड, है ना, व्हाट, या करेक्ट, योर क्वेश्चन इज राइट, कि व्हाई द डबल कोट्स इज देयर, व्हाट इज द, हाँ, व्हाट इज द नीड. बट आई एम आल्सो नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज द नीड. मतलब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है इसलिए डबल कोट्स है, या फिर मतलब कुछ ऐसा हो सकता है? सोचो कि प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रॉपर्टीज जो होता है जनरली हम लोग दो, अभी जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ. मान लो कि दिस प्रॉपर्टी है ना, नेम. सपोज आई हैव टू गिव प्रॉपर्टी एज अ फर्स्ट नेम, करेक्ट. तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट नेम, करेक्ट. बट लेट्स सपोज आई गिव अ स्पेस, तो विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क, because space is not allowed. But in JavaScript we can give a space if we make it like a string. देखो अभी हो गया, अभी कोई एरर नहीं है, देखो समझा. ठीक है. अब सपोज आई रीलोड दिस थिंग एंड अगेन हिट दिस API. देखो क्या होता है. In that case you will get a different output. You can see first space name is coming, correct? तो in JavaScript object space is allowed, इसलिए every property is a string, और string में space is allowed. I guess that is the reason, maybe, है ना, that should be the reason. correct, string में allowed होता है ना, space तो allowed होता है, तो that is the reason you can see this space is allowed. And double quotes, single quotes तो standards बनाना था उनको, so I guess they went with the double quotes. उसका भी कुछ reason होगा double quotes की single quotes नहीं. Generally क्या होता है, most of the languages like C#, Java and all those things have double quotes only. ठीक है, सिंगल कोट्स भी होता है जावास्क्रिप्ट में, सिंगल कोट्स भी होता है, बिकॉज सिंगल कोट्स लिखो, डबल कोट्स इन जावास्क्रिप्ट डजंट मैटर, है ना, दोनों के लिए. इंस्टेड ऑफ हियर आई राइट, इफ आई गो टू दैट डेटा फाइल, आई राइट डबल कोट्स, डजंट मैटर, ये लिखो या वो लिखो, है ना. इन जावास्क्रिप्ट बोथ इज द सेम, बोथ विल वर्क आइडेंटिटी, है ना, एज द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम थिंग, ऐसे लिखो या वैसा लिखो. सर बैकटिक भी तो यूज कर सकते हैं. सॉरी, बैकटिक भी यूज कर सकते हैं, हाँ, वो दैट इज आई कैन से recent ES6 ना, वो ES6 में होता है, ES6 में होता है, I guess that is the ES6, all those things, features, backtick ना, yes sir, backtick and all those things, हाँ, वो I guess तुम जो बोल रहे हो ना, backtick and all those things, that is the Java, I guess that is the उसमें backtick में नहीं लेगा ये backtick नहीं लेगा, कुछ ये backtick का different is a different application. ठीक है, backtick का अलग यूज है, वो string इंटरपोलेशन के लिए यूज होता है. सपोज वी वांट टू रिप्लेस समथिंग, उसका अलग यूज है, दैट इज. बट इन जावास्क्रिप्ट वी स्ट्रिंग है
So either it will be a single quotes or it will be a double quotes. दोनों में से एक रहेगा, ठीक है, एक रहेगा, ठीक है. नाउ अभी देखो इस पे आते हैं, ठीक है. मैंने ये डेटाबेस वाला नहीं, सॉरी, इस पे आते हैं, ठीक है. सिंपल से मेरा एपीआई था, है ना, रेस्ट एपीआई था, बनाया मैंने, ये कर दिया, ठीक है. नाउ गेट से क्या हो गया, जो भी डेटा था आपका वो आ गया, ठीक है. बट पोस्ट क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पोस्ट ऑपरेशन, व्हाई यू नीड पोस्ट? Send any data. Correct, Send the send data. any data, but can't we send the data using the get only? Is it possible to send data using get? Yes. How? By Because I want to send some slash. data using get, how can I pass? By using slash after Parameters, route, na? Yeah. Yes. If I'm using this route, है ना, I can pass, let's suppose 10 or that is like a parameter, correct? What you're talking about is a parameter, है ना, like ID or whatever, है ना. ठीक है, ये parameter हो गया. That is one way. Other way is what? If suppose we are not using parameter, then how I can send data using the get only without using post? ये possible पता है? चलो give you an example, ठीक है. अभी देखो यहाँ पर हमारा get operation है, ठीक है. In the body नहीं, दो यहाँ query आ रहा है, query parameters, params, ठीक है. I guess everybody knows this thing, but if you don't know, I will just write it, है ना. Suppose I pass ID value equal to 5. Pass one more thing, city equal to. Can you see the URL is changing? Can you see URL? Yes. ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग. जो पाथ है आपका, उस पाथ के बाद क्वेश्चन मार्क देने, क्वेश्चन मार्क आप देखो, क्वेश्चन मार्क के बाद these are the different parameters. City is equal to 5 and city equal to Ranchi, and we can add one more. सबके बीच क्या साइन रहेगा, ampersand, इसको बोलते हैं ampersand, है ना. Suppose I want one more parameter, okay, country, ठीक है. तो country equal to blank, तो अभी डाला u, तो country equal to u. So you observe the pattern. What is the pattern? Okay, ampersand है ना, ID city, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं. तो अभी दो मैंने हिट किया, डिव पॉइंट में लगाता हूँ. आई गेस डिव पॉइंट इज नॉट देयर. आई पुट अ डिव पॉइंट हियर, है ना. आई पुट अ सेंड, दो इसने हिट किया, ठीक है. अभी रिक्वेस्ट में देखो, तो ये तो डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट में आएगा, रिस्पॉन्स में नहीं आएगा. रिक्वेस्ट इज द इनकमिंग थिंग टू द एपीआई एंड रिस्पॉन्स इज आउटगोइंग. तो अभी तो आया ना, तो वो जो पैरामीटर्स है, जो भी है URLs, parameters and all this thing, it will be in the request object. Just go through this request object. यहाँ देखो, यहाँ पर होगा, दिखाता हूँ. In request, you can see this parsed URL. If I open this parsed, can you see this thing raw? Users ID equal to 5, city equal to Ranchi, country equal to you. It's coming, no? It's coming. The URL is coming, no? Correct? Are you understanding what is happening? Yes, sir. तो URL में आ रहा है ना, अभी दिखाता हूँ. और भी अभी इसमें let me check. I'm not sure how to extract that values. Original URL, but there, query है ना, query, yeah, dot query. You can see request dot query. Can you see this thing? Request dot query. Can you see? Request dot query is what? Can you see city equal to Ranchi, country U, ID 5, correct? We are getting these values ना, city, Ranchi and country U. Yeah. तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा where ID equal to what? ID कहाँ से मिलेगा मुझे? Query parameters, correct? तो लिखूंगा equal to request dot query. Query is an object. उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है. हाउ टू एक्सेस द प्रॉपर्टी? यूजिंग डॉट है ना, डॉट आईडी. बट उससे बेटर है कि यूज दिस थिंग, दिस फॉर्मेट, दिस इज मच बेटर बिकॉज आईडी इज अ प्रॉपर्टी ना. ये ज्यादा बेटर है. ऐसे यूज करो
Similarly, you can get the country, city, whatever you are getting, 3 values. ठीक है, यहाँ क्या पास कर रहे हो? City and country. तो यहाँ लिखो city. यहाँ पे हो गया city. यहाँ पे क्या? Country. यहाँ पे क्या हो गया? Country. Okay. Now you're getting all the things, correct? अभी आपको तीनों मिल गया, ठीक है? अभी मैं आपको रीलोड करके दिखाता हूँ. I will reload this thing. Reload हो गया. I will again, it's again running. Now again I will hit this thing. Again it is the debug point. देखो ID क्या आया? 5. City क्या आया? रांची. Country क्या आया? U. But ID is what? ID is a string or an integer. What do you think? Integer. It's not integer. Double in single quotes में तो how can it be integer ना Karan? The variable is in single quotes ना, it is a string ना. How to differentiate between whether it is a string or an integer? देखो ना, अगर single quotes में तो it's not a number ना in JavaScript. So whatever you pass in the query string is taken as a string only. हाँ, you then convert into that what I could say into integer number. That is a different thing. है ना, वो बाद में आएगा. But initially it will be everything will be a string only. ठीक है? तो ये ऐसे हमको get से मिला and then अभी response तो कुछ भी नहीं है. Response still is the same thing. Whatever you are returning, है ना, is the same thing. Correct. What is the response? The data. ठीक, data आ गया. ठीक है. Now I will show you the post request. Same I will copy. I will change it to post. Okay. Now post में देखो, this is a body. You see body? Post में we have a body parameter, body. ठीक है. But if I go to get, get also is a body, raw JSON. It equal to n. Suppose. Hit again. देखता हूँ क्या होता है. इसने फिर से हिट किया. अभी मैं रिक्वेस्ट देखता हूँ. Request dot JSON देखना पड़ेगा. I guess request dot JSON. Request dot JSON ही होगा. JSON H. Raw headers route. Okay, let me type, है ना. तो ये request object है आपका. Request dot data नहीं है. Request dot body है ना. Request dot body देखो. Value of request dot body undefined. Request dot body is undefined. Body. Request dot body is undefined. Go to definition. Body is a property or a function. Body cookies method string. Just 1 minute. Okay. Request dot JSON भी नहीं है. Request dot read accept destroy error get headers. Not sure. Is the param say you will get the query string, I guess. Param you will not get the body. Call push query range. Raw headers, raw read. Socket. I guess body should be there, but I'm not sure why body is not
not sure body is here. JSON. No, body is, I guess. Okay. Let me search. JSON from request. Yes. How do I get? First dot body dot name. Okay. Okay, but I guess for that I have to already use this app dot use. That's why it is not coming. Ye I have to use. Just give me 1 minute. Hello. 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 Okay, so I guess what they are saying, we have to use this, sorry, REST API dot use JSON. I guess this is what we are saying.
use this as a correct express.use express.json, then I can see request.body.name, the body में आ जाएगा value, and then you will get the data in the body. Show you है ना, body to reload करूँगा मैं, let me reload this thing. Okay. Okay. Now I go here. I have the get. So I am passing this also and body also. So I copy this. You can see it's coming. You can see body is coming. ID 10. Correct. मैंने तो pass किया. Correct. ID 10. It's an object. Correct. ID 10. And same thing is coming in the body. Request.body is an object. So post maybe it's coming. See, if I change it to post, so still I can pass the JSON. If I make it a get, then also I can pass the JSON. But the difference is that it's a standard. Like in get we don't pass it. In get, when we do a get, we don't pass the body. That is the standard. You can do it, but that is not a right way to do. The right way to do is make it post and then send it, because when you say post, then people will say, okay, this is the post operation, so body must be there. Without the body, there is no point of having a post operation. तो पोस्ट है तो बॉडी होगा, बॉडी होगा तो इसमें क्या भेजा आपने, आईडी भेजा और क्या पैरामीटर भेजा, सिटी भेजा, जो भी ऑब्जेक्ट है जेसन फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग और व्हाटएवर इज, यू कैन पास एनीथिंग, एरे व्हाटएवर. So when you pass this thing in the post, let me hit this. So it will hit the post endpoint, not the get endpoint, correct? Because देखो ये भी slash users है, ये भी slash user, the route is the same, इसका path same है, but ये get operation है, this is the post operation. So when you request for a post operation, it will hit the post endpoint, obviously, no? It will hit the post endpoint. तो post endpoint को hit किया, उसके बाद it will do whatever it wants to do. You can check again. If you get request dot body, you can see क्या आ रहा है, ID 10 city Pune, correct? Because we are passing this thing, ID 10 city Pune, correct? So it doesn't matter. But the standard way of doing is that if you're doing get, then pass the data in the query string, not in the body. This is wrong. Don't do this thing. You pass in the query string the data, possible, no issues. And if you're doing a post, then obviously it will not come in the query string, it will come in the body. ठीक है, ये body जो रहेगा, this is will be in JSON format, and take it, and then you can do whatever you want to use in database, whatever you want to do. ठीक है, and I'm sending, and I will just return back. And what I'm trying to do, I'm trying to add some data. See, here जो मैंने code लिखा है, I'm trying to add some data dynamically. तो यहाँ data.js में कितना ऑब्जेक्ट था? If you open this data.js, only two objects, ID1 and ID2. ठीक है, correct? But if I do a post operation, okay, and then I do a get operation, see what will happen. I'll remove the breakpoint from here, so you can see the response will have more objects. Let me copy this thing, Control C, and I will go in the JSON formatter. I will paste it. ID1, ID2 and ID3 is also there. So ID3 किधर से आया? Because we did a post twice. So ID3 and ID4 is generated through the code. और ये दोनों वैल्यूज ऑब्जेक्ट में कहाँ से था? पहले से था ना, डेटा फाइल में, करेक्ट? उस ऑब्जेक्ट में मैंने ऐड किया, करेक्ट? ID2 and ID3. And this is how it is done. Okay, where is that? This one. See, this is a code. So are you getting something? What is happening? Get, post, what is the meaning of that API? JSON क्या होता है? समझ आ रहा है?
सर ये जो एडिशन किया है ऑब्जेक्ट का हम्म, वो कैसे हुआ है? पुश किया ना, सिंपल है ना, पुश किया है। ये एरे है, पुश किया इसमें ऑब्जेक्ट, सिंपल है ना, ऑब्जेक्ट पुश कर दिया, इतने किया और कुछ नहीं किया। वी कैन पुश ना an object in the array, correct, we push that. So array में 2 ऑब्जेक्ट था, तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, आते रहेगा। This is how it will be done ना? So don't worry, I will push this code in the git repo, okay, and you can use this repo and you can test this. इसमें 2 ही फाइल है, ठीक है, एक है ये फाइल और एक है data.js, 2 ही फाइल है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पेश कर देता हूँ, इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू वांट टू रन। और ये हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस.js, नोड जिसने नहीं किया है उसको करना पड़ेगा, Node.js एंड Node.js के अंदर एक्सप्रेस.js है ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी ये रन होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टू मेक अ रेस्ट एपीआई डेटाबेस इज नॉट मैंडेटरी। तो इसको मत सोचो कि अच्छा यू हैव टू मेक अ एपीआई, so database is not mandatory, but yeah, in real world scenario definitely we need database. Now where will you store the data? We'll store in database, but sometimes it happens that you are calling this api and this api is calling one more api which is a third party api, ऐसा भी होता है, that is a different api which is you have taken the, ऐसा भी होता है, like suppose you are building some application using Zomato and all those things है ना, or some other thing, they, you don't have your own database, just calling the other APIs and just getting the data, it is also happening, ऐसा भी होता है। So you will understand once you will go through this thing ना, you will understand. But आज के लिए इतना ही करूँगा मैं, दोनों फाइल अटैच कर देता हूँ, don't worry, in the chat itself, so you can go through this thing. So this and data, yeah. So I can just 1 minute. Open the chat. I don't know. ठीक है, I'll upload. So data and this, और ये DB के साथ जो है, DB वाला भी कर देता हूँ। DB वाला तुम लोग बाद में प्रैक्टिस करना, for that you need SQLite and all those things, but first practice without that thing. So I'm attaching. So Node.js is very easy, कोई इतना difficult नहीं है, if you know understand JavaScript you can easily do it. जो वहाँ पर एडवांस कंसेप्ट पढ़ा है वही चीज यहाँ लगाना है, कुछ भी नहीं है। लाइक यू हैव कॉल बैक क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, constant where and all those things, same thing is in Node.js, so nothing is like very different here. In your React also you have studied promises and all those things, वो भी यहाँ भी promise पढ़ना है, so it is not very different है ना। So you go to today again, this go through this REST API and study this all this HTTP. I'm typing here HTTP status code. What is HTTP status code? This is important, है ना। बताया था what is 200, what is 201, what is 400, what is 401, what is 500, ठीक है, ये सब स्टेटस कोड पढ़ो कि क्या इसका मतलब होता है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द HTTP मेथड, इसको मेथड बोलते हैं ना, API वर्ड मेथड। So what is the method? One is your get, one is your post, one is your put. ये तीन मेजरली यूज होता है। Then we have one more as delete, ये होता है। Then you have patch, ये 5 पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा, कल फिर से रहेगी क्लास, तब ये पूछूंगा व्हाट इज गेट, व्हाट इज पोस्ट, व्हाट इज पुट, व्हाट इज डिलीट, व्हाट इज पैच। एग्जांपल्स का साथ रेडी करना है ना। व्हाट इज 500 एरर, व्हाट इज 500, व्हाट इज 400, व्हाट इज 401, व्हाट इज 200, 201। बेसिक्स है ये सब पढ़ना। अगर यू टू अंडरस्टैंड APIs, you to understand these things. सर मेरे C# में ये गेट एंड पोस्ट तो है, ये बाकी पहली बार सुना, ये पढ़ना है मुझे? पढ़ना पड़ेगा ना, APIs अगर पढ़ना है ठीक तो है। you to understand ना what is 200। दो तुम्हारे में भी जो गेट एंड पोस्ट है
ठीक है, उसमें भी 200 आता है, तुम जाके चेक करोगे ना हाँ एरर इन आता है, 400 भी आता है, हाँ 400 भी आएगा, 500 भी आता 400 है। भी आता है ना, वही चीज है। तो पता है, तो वही चीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द बैक एंड, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग फॉर एवरीबॉडी, है ना। और पढ़ो, 201 होता है, 202 होता है, व्हाट इज 202, व्हाट इज 201, ठीक है। एंड गेट पोस्ट पुट, इसको पढ़ो इन टर्म्स ऑफ एपीआईज, REST APIs, what is REST APIs, ये पढ़ो, what is REST APIs ना, बैकएंड APIs तो फाइन है, बट what is REST का क्या मतलब है, वीडियोस देखो थोड़ा सा, तो बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। एवरीबॉडी, वरुण तुम्हारे लिए भी अच्छा है ना, बिकॉज एनीबॉडी कैन आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट REST APIs, यू कैन से ना अच्छा MVC पे काम किया है, बट आई हैव नॉट वर्क ऑन APIs, बट आई नो बेसिक्स, सवाल पूछे क्या होता है गेट पोस्ट, दे कैन आस्क यू बेसिक क्वेश्चन ना, तो इफ इट इज गुड टू हैव ना एटलीस्ट बेसिक आइडिया, तो ठीक है। ठीक है, so do one thing, just go through this again, tomorrow we'll again have a class, till that time run this thing, if any doubt post in this chat कि मुझे ये समझ में नहीं आया, और WhatsApp किस तरह ये समझ में नहीं आ रहा है, we'll try to see है ना what to do, ठीक है। बट आई गेस इट्स वेरी pretty simple, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। डीबी वाला भी मैंने भेजा, डीबी से कैसे लाना SQLite इंस्टॉल करके, फॉर इंस्टॉलिंग SQLite ना पाइथन इज कंपलसरी, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पाइथन अगर है तो SQLite चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। एंड SQLite इज नॉट द लाइक गुड डेटाबेस, बट इट्स ओके फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बट जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो वी विल आल्सो ट्राई विद अदर डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट SQLite इज आल्सो गुड टू प्रैक्टिस, टू स्टार्ट विद, ठीक है, बस बेसिक से स्टार्ट करना है। एंड मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डोंट गो बाय नेम, कि मन स्टैक होता है ना, मन स्टैक है तो MongoDB यूज करना ही है, बिकॉज M स्टैंड फॉर MongoDB, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर तो आपको MongoDB आना ही चाहिए, मोनोस्टैक ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू नो React एंड यू नो नॉर्मल डेटाबेस, ठीक है, व्हाट इज लाइक SQL बेस्ड डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर में, एनीथिंग SQLite, SQL MySQL, Postgres बेसिक्स, दैट इज गुड, कोई इशू नहीं है, तो बेसिक्स आएगा। एंड देन वन मोर थिंग मैं बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ ORM, ठीक है। ORM तुम्हें पता है व्हाट इज ORM, वरुण? नहीं सर। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, जाके आज पढ़ना तुम खुद से, कल मैं पूछूंगा इसका आंसर कि व्हाट ORM डू यू यूज इन .NET, ठीक है, कल ठीक फिर है। से पूछेंगे व्हाट इज ORM। तो ORM भी हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग प्लेन SQL क्वेरी नहीं लिखेंगे, we'll use some ORM tools and framework to make our life easy when we're dealing with database, वो सब भी पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, बेसिक्स आराम से सीख जाओगे, Node.js का इंटरव्यूज आराम से निकालोगे, डोंट वरी, ठीक है। इफ यू नो बेसिक्स एंड APIs क्या है, सिक्योरिटी का भी हम लोग कवर करेंगे, अभी स्लोली जाएगा, इतना फास्ट नहीं जाएगा, फर्स्ट फोकस ऑन डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग, हाउ टू मेक REST APIs, फिर सिक्योरिटी पे आएगा, सिक्योरिटी कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, दोस थिंग्स, हाउ टू जनरेट टोकन एंड ऑल दोस थिंग, वो बाद में आएंगे, पहले बेसिक्स तो पढ़ो, ठीक है। एंड MongoDB सब कुछ नहीं, मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, बट बता दूंगा क्या है, बट उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी अगेन ऑन टाइम, ठीक है। मेन थिंग इज योर डेटाबेस, लाइक नॉर्मल डेटाबेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं RDBMS, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं SQL बेस्ड, ठीक है, SQL। और MongoDB जो आता है वो आता है NoSQL में आता है, NoSQL which is not important, NoSQL में MongoDB आता है which is not उतना यूज नहीं होता है, वो कम यूज होता है, तो मेजरली व्हाट इज यूज्ड इज RDBMS और रिलेशनल डेटाबेस व्हिच इज SQL बेस्ड। RDB सिंपल है, टेबल बेस्ड, जहाँ टेबल आएगा, रो एंड कॉलम आएगा, वो RDBMS हो गया, SQL हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज योर एक्शन आइटम फॉर टुडे, गो एंड रन दिस कोड। लास्ट टाइम बताया था SQL आपको बेसिक्स आना चाहिए, है ना, व्हाट इज टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू राइट अ सिलेक्ट क्वेरी, हाउ टू राइट अपडेट क्वेरी, हाउ टू डिलीट फ्रॉम DB, है ना, व्हाट इज द प्राइमरी की इन टेबल, बेसिक थिंग है ना, पढ़ो, व्हाट इज द प्राइमरी की इन अ टेबल, प्राइमरी की इन फॉरेन की, बेसिक्स पढ़ लो, इजी, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। प्राइमरी का मैंने लिख दिया, सब चैट में लिखते जा रहा हूँ ना, इसे पढ़ो, कल तक टाइम है, कल से फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, डिस्कशन करेंगे, एंड कल आई विल फोकस ऑन DB ऑल्सो, एंड आई विल गिव मोर रियल टाइम रियल वर्ल्ड कोड, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली एक पेज का तो कोड नहीं होता है ना रियल वर्ल्ड में, इन वन पेज एवरी कोड, योर एंटायर API विल इट विल बी बिग, है ना, तो हाउ टू मेक अ प्रॉपर रियल वर्ल्ड API, विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है। तो ठीक है, फॉर आई गेस फॉर गुड टुडे वी आर गुड, एंड लेट्स मीट टुमारो, ओके, एनीथिंग एल्स? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, जिसका छूट गया है वीडियोस देखो, फिर से करो, एनी डाउट सो लेट मी नो, है ना, कोई इशू नहीं, यू कैन पिंग मी डायरेक्टली आल्सो, ठीक है, बट वी हैव टू आल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग, ठीक है, करेंगे इसको, ठीक है। गुड नाइट सर।
Okay, then चलो bye, good night everybody, bye.